Hello students. In the previous chapter we studied regarding the cell and its organelles. So we also studied that cell is also having division of labor. Means there in the cell division of labor is for the sake of and at the level of organelles, like mitochondria are there which are powerhouse of the cell. Ribosomes are there which are there to produce proteins for the cell. Then Golgi complex is there which are dividing to produce vesicles. Lysosomes are there which are containing hydrolytic enzymes to break down the germs as well as unwanted cells of the unwanted whatsoever foreign particles are coming or cells are coming or germs are coming inside the cell. So there is division of labor at cellular level. This is for those organisms which are unicellular. So unicellular organism like amoeba and unicellular organisms like amoeba and paramecium. Amoeba and paramecium. They are unicellular organisms. So their division of labor is at cellular level, means at organelle level. But for multicellular organism, there is also division of labor. But because multicellular organisms are made up of more than one types of cells, so different cells are assigned different functions to perform. A single cell or a group of same type of cells are not able to perform all the functions of the cell. Like some of the cells, they are have assigned this duty for transportation of useful materials like oxygen, food and removal of waste products from the cell. Some cells are assigned a duty for conveying the messages from the external environment to the brain or spinal cord. So all the cells are not able to perform these functions. In that case, the group of cells organize themselves to perform different functions of the body. So the group of cells, when they are grouping together and performing a particular function, then they are called as tissues. So today we'll start with our third chapter, that is tissue. What is tissue? A group of cells having common origin. What is their common origin? That work together to perform a particular function. Means what is a tissue? A group of cell having common origin. What is meaning of common origin? Means in next chapter, diversity of the living organism, we'll study regarding the germ layers. कि जो embryos हैं, they are developing from 2 germ layer या 3 germ layers. तो those higher organisms जो हैं, they are developing from 3 germinal layers, means ectoderm, endoderm and mesoderm. So हमारी body के जितने भी cells या organs हैं या हमारे systems हैं, वो अलग अलग जर्म लेयर से बनते हैं. तो अलग अलग सेल्स या टिश्यूज की अपनी अपनी वो ओरिजिन होता है. तो वो सेल्स जो सेम जिनका ओरिजिन हो, चाहे वो सिंपल है, जो सिंपल टिश्यूज होंगे सारे एक जैसे होंगे, बट दे आर हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड दे परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. और जो कम्प्लेक्स टिश्यूज होंगे वो मोर देन वन टाइप होंगे, बट जो 4 टाइप है वो चारों अलग अलग टाइप्स जो होंगे वो आपस में एक जैसे सेल्स होंगे, बट दे आर असाइंड अ complex function to perform, so they are made up of more than one type of cells, right? But they are tissues. Like some of the cells, they are originated from, some of the tissues they are originated from organs, from ectoderm, some are from mesoderm and some are from endoderm. We will discuss regarding this in detail in the diversity of living organism. Now what is tissue? A group of cells having a common origin. Now I think you are clear with the word common origin. That work together, जो आपस में इकट्ठे मिलके काम करते हैं to perform a particular function. कोई खास काम करने के लिए वो सारे मिलके काम कर रहे हैं. So that is the tissue. For example, nervous tissue. In our body, nervous tissue, it's made of nerves, neurons. तो neurons का क्या काम है? They are taking up messages from external environment through sense organs. Like आंखों से हमने क्या देखा, कानों से हमने क्या सुना, नाक से हमने क्या स्मेल किया, टंग से हमने क्या टेस्ट किया, स्किन से हमने क्या फील किया, कोल्ड,
हॉट। तो ये सारे मैसेजेस को ब्रेन को कौन पहुंचा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को कौन पहुंचा रहा है, नर्वस टिश्यू थ्रू आर न्यूरॉन्स, और हमें फिर वो फीलिंग हमारा ब्रेन फील करवाता है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो सारे हम रिस्पॉन्सेज क्या देते हैं। सो दिस इज कन्वेड बाय नर्वस टिश्यू। देन कनेक्टिव टिश्यू इज देयर, ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। राइट नाउ आई हैव डिस्कस्ड कि ब्लड जो है इट इज ट्रांसपोर्टिंग food, oxygen, then it is bringing back the waste materials like carbon dioxide, urea, nitrogenous waste from the body. So blood is flowing throughout the body, so it is transporting, so it is acting as transporter for connective tissue. Like muscular tissues, so our muscles expand and contract and relax होते हैं हमारे muscles, तो because of the contraction and relaxation movements of the muscular tissue, we are able to undergo our movements. So these all are the tissues which are present in animals. So plants are also having some tissues like xylem. So we all are knowing, you have gone through these terms in your lower classes. What is xylem? The tissue present in plants which is responsible for the transportation of water and minerals from roots to the upward parts of the plant. And phloem tissue is there which is responsible for the transportation of food prepared on the surface of leaf by the process of photosynthesis to upward as well as downward parts of the plant. So these two tissues are present in plants. So the study of tissue is known as histology. The study of tissues is known as histology, branch of science which deals with the study of tissues, that is called as histology. So there is also, I will discuss again कि there is division of labor. जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया है कि सेलुलर लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर है, इसी तरह से टिश्यू लेवल पे भी देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें कि डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दे हैव बीन असाइन्ड डिफरेंट वर्क टू परफॉर्म। लाइक मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके वो आपकी बॉडी मूवमेंट्स करता है, आपको मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। नर्वस टिश्यू का क्या काम है, ये आपके मैसेजेस को कन्वे कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगी, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर एट द टिश्यू लेवल, एंड टिश्यूज देन फर्दर ग्रुप अप टू फॉर्म organs, like they have shown you in the diagram. This is the structure of neuron, which is the basic unit of nervous tissue. So it is having three parts: cell body or cyton, then dendrites and axon. तो cell body है typical animals, जो typical animal cell है, just like that it is having nucleus, cytoplasm. So dendrites क्या करते हैं, external environment से जो message है वो synapse के through receive करते हैं, it is sending to the cell body and cell body then convey to the axon part. जब वो मैसेज एक्सॉन पे आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल करंट के फॉर्म में आता है, और जब वो एंड पे आ जाता है देन नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो उसको कन्वे होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, फिर अगले न्यूरॉन में अगेन इट विल पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये मैसेजेस कन्वे होते हैं। तो इसका मतलब दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द ब्रेन, राइट। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यूज की हमारी लाइफ में, किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो टिश्यू लेवल बना है इट हैज ब्रॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर एट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि पहले सेल के लेवल पे डिवीजन थी, अब क्या हो गया, जब ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल, वो हायर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। So they have made the division of labor at tissue level for making their work of the body organs easy. Then tissues join up to form organs and organs join up to form organ system and then the organism. तो division of labor से आगे further काम easy हो जाता है। Then workload जो है individual cell का reduce हो जाता है by the organization of tissues. अब when there is improved ऑर्गेनाइजेशन और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड ड्यू टू इंक्रीज हायर एफिशिएंसी द सर्वाइवल रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो गेट इंक्रीज। सो डिवीजन ऑफ लेबर या ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो जाता है, हायर लेवल से ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी और उसका सर्वाइवल भी बढ़ जाता है।
Next, we'll discuss why plants and animals are made up of different types of tissues. Though we are saying that plants and animals both are living organism, दोनों ही living organism, but why they are made up of different types of tissue? Why they are not made up of same type of tissue? This is because कि first is plants are autotrophic. They are undergoing the process of photosynthesis by trapping solar energy. So they are autotrophs. Secondly, they are stationary. They are not moving from one place to another place. They are stationary. So because of their stationary nature, their energy requirements are low. That's why they need to consume less energy, and so most of their tissues, they are supportive. वो सिर्फ उनको protection दे रहे हैं because they have to bear the stress and strains of external environment. वो मूव करके बचा नहीं सकते ठंड से, गर्मी से, इन्वायरमेंटल के स्ट्रेस से. तो उनका जो ज़्यादा टिश्यूज होंगे कौन से होंगे? सपोर्टिव, जो उनको सपोर्ट कर सके, उनको ड्राई होने से बचा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, मीन्स प्रोटेक्टिव हो, सपोर्टिव हो, और उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे. तो उनके टिश्यूज क्या होंगे? इस तरह के होंगे. तो मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज दे आर डेड, वेरी फ्यू आर लिविंग. जैसे फ्लोएम का जो है दे आर लिविंग, पर मीन्स इनके जो ज़्यादातर टिश्यूज होते हैं प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं. दैट्स वाई दे आर डेड इन नेचर, मीन्स दे डोंट कंटेन लिविंग protoplasm. On the contrary, about the animals. So animals, they are heterotrophs. They depend upon other organisms for their food. So they have to move from one place to another for fetching their food. So their energy requirements are very much more as compared to plants. So that's why they are having some different types of tissues, and most of their tissues are of living protoplasm. So that's why they are having different types of tissues as compared to animals, right? So next, regarding the types of tissues in plants, we'll discuss in next video. Thank you, beta.